what I told in the previous class. Actually, here inhibitor, whether it is competing with the substrate or not competing with the substrate, ये क्या करेगा? Not competitive, as because the shape is similar to the substrate or different from the substrate. सभी जगह वो competition absent होगा, है कि नहीं? So inhibitor different from, right to point. Inhibitor different from substrate which binds to enzyme other than catalytic site. Other than catalytic site मतलब क्या हो जाएगा? Non catalytic site है कि नहीं? इसीलिए प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन मैंने किया था कि अगर सबस्ट्रेट के साथ इनहिबिटर सिमिलर होगा तो वो सेम साइट में बाइंड करेगा जहां पे सबस्ट्रेट बाइंड करता है. बट एज बिकॉज हियर द एंजाइम the inhibitor is different from the substrate, that is why the inhibitor will be bind the site other than the catalytic site. So इसीलिए substrate का binding site and catalytic inhibitor का binding site अलग अलग होगा. तो इसीलिए क्या होगा? Competition present होगा कि absent? And that is called as non-catalytic site. No competition. With substrate. Binds to enzyme by covalent interaction. Strong interaction can't be altered by further addition of substrate. जैसे हम लोग पढ़े थे ना, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या होता है ना, सबस्ट्रेट ऐड करने से ये अल्टर हो जाता था. तो इसीलिए क्या था, वो रिवर्सिबल था कि इरिवर्सिबल था? बट इट इज व्हाट? So it is irreversible. So it is irreversible. ये अल्टर नहीं होगा, चेंज नहीं होगा ना. और एक ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे इनहिबिटर तो नॉन कैटालाइटिक साइट पे बाइंड कर रहा है, राइट? सो पॉसिबिलिटीज क्या है? इनहिबिटर कैन बी bind with the free enzyme as well as enzyme substrate complex. Yes or no? Yes, yes. अगर एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट बाइंड भी कर गया है, नाउ इट इज कॉल्ड एज व्हाट? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ भी इनहिबिटर बाइंड कर सकता है, क्योंकि इनहिबिटर का बाइंडिंग साइट नॉन कैटालाइटिक साइट है. दैट इज व्हाई जैसे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में हम लोग देखे थे कि वहां पे इनहिबिटर सिर्फ और सिर्फ फ्री एंजाइम को बाइंड करता था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? They will bind both. So here the inhibitor will bind both free enzyme as well as enzyme substrate complex.
So here the inhibitor will bind with free enzyme as well as enzyme substrate complex both. And this is the evidence in favor of what? Lock and key के induced fit hypothesis. कल हम लोग बात किए थे. So it is evidence in favor of induced fit hypothesis. समझ में आया? ठीक है. अभी ग्राफ देख लेते हैं. ये एक्चुअली ये भी मैक्स हुआ कि नहीं? And this is the half of the Vmax, that is Vmax by 2. So this is substrate concentration. This is the rate of reaction or velocity of reaction, stands for V. Now we will add what a non-competitive inhibitor to this particular reaction. जैसे हमने नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऐड किया, देखिए रिएक्शन क्या है यहाँ पे, जो रेट ऑफ रिएक्शन है स्लो डाउन हुआ कि नहीं, लेकिन क्या ये Vmax तक रीच कर रहा है? Is it reaching the Vmax as usual just like the competitive inhibitor? No. क्योंकि ये इरिवर्सिबल है. आप इस पे फर्दर सबस्ट्रेट ऐड करेंगे तो Vmax तक रीच नहीं करेगा जैसे वो वाला रीच कर रहा था. तो here actually they do not reach the Vmax. So this must be the new Vmax. Yes or no? This must be the new Vmax for the reaction in presence of non-competitive inhibitor. अगर ये new Vmax है तो ये हो जाएगा उसका Vmax by 2, है कि नहीं? अरे होगा कि नहीं? Yes. ये उसका अगर Vmax हो गया तो उसका हाफ हो जाएगा ना Vmax by 2. तो Vmax by 2 देखिए सेम रहा या चेंज हुआ? Km कांस्टेंट रहा कि Km इंक्रीज रहा कि डिक्रीज रहा? तो पहले भी Km जो था after the non-competitive inhibitor the Km remain constant. So what is, अगर आपको पूछा जाए कि increased Vmax, sorry, decreased Vmax and unchanged Km, competitive या non-competitive? अगर आपको बोला जाएगा कि unchanged Vmax but increased Km, क्या होगा? कॉम्पिटिटिव. कल हमने पढ़े थे ना. तो Vmax कांस्टेंट है, Km इंक्रीज्ड है तो कॉम्पिटिटिव. Vmax डिक्रीज है, Km
कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा? नॉन। समझे? प्लीज कंप्लीट इट। In presence of non-competitive inhibition. Non-competitive inhibitor. So, effect on Emax decreased. Effect on Km unchanged. Completed? Yes. इसका एग्जांपल देते हैं। You know, cyanide is a very deadly poison, right? Yes. साइनाइड जैसे हम लोग इनहेल करते हैं, सॉरी इनटेक करते हैं, तो इमीडिएटली डेथ हो जाता है विद इन सेकेंड, राइट? एक्चुअली कैसे होता है? साइनाइड खाने के बाद उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उसको बचाना मुश्किल है, बिकॉज साइनाइड एक्चुअली डायरेक्टली that is inhibit a very important enzyme of your body, and that enzyme is called as cytochrome oxidase. नाम सुने? Cytochrome oxidase is an enzyme which is present in the mitochondria, which is need for the production of ATP, and ATP is the ultimate source of your energy for the body. तो ये साइनाइड क्या करता है ना, उस एंजाइम को बाइंड करता है एज ए नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो ये रिवर्सिबल तो नहीं है, ये तो इरिवर्सिबल है, तो उसको हम लोग अल्टर भी नहीं कर सकते हैं। सो इसीलिए वो एंजाइम धीरे धीरे क्या होगा ना, एफिशिएंसी डिक्रीज करता जाएगा, एटीपी प्रोडक्शन कम होता जाएगा एंड लीड्स टू डेथ। सो एग्जांपल लिखिए, साइनाइड binds with cytochrome oxidase of mitochondria irreversibly to kill the animal. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, क्वेश्चन यहाँ से रहेगा, ठीक है? 3 एग्जांपल मैंने दिया था कॉम्पिटिटिव का, एक एग्जांपल मैंने दिया नॉन कॉम्पिटिटिव का, राइट? Now we are coming to the allosteric modulation और feedback inhibition. ये था सेकेंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन नंबर 2, राइट? हम लोग स्टार्ट किए थे इनहिबिशन मैकेनिज्म। कॉम्पिटिटिव कंप्लीट हुआ, नॉन कॉम्पिटिटिव कंप्लीट हुआ। नाउ कमिंग टू द थर्ड, एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन और फीडबैक इनहिबिशन। Non-competitive allosteric modulation or feedback inhibition. Here actually the product of same or different chemical reaction act as inhibitor to
inhibit the enzyme activity. So actually, who acts as the inhibitor here? Who acts as the inhibitor here? Product यहाँ पे inhibition का काम करता है. तो प्रोडक्ट अगर एंजाइम को इनहिबिट करेगा तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन कम होगा, रिएक्शन प्रोसेस कम हो जाएगा. So here the product of the same or different क्या होगा? Same भी हो सकता है chemical reaction और maybe it is belongs to different chemical reaction. तो जरूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट सिर्फ ओन केमिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट हो, किसी दूसरे केमिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट भी यहाँ पे इनहिबिशन का काम करता है. सो लेट्स सी इट. पहली बात ध्यान रखना, दिस एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन इज द मिडवे बिटवीन द कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव. मतलब इसके पास दोनों का कैरेक्टर है, कॉम्पिटिटिव का भी कैरेक्टर है एंड नॉन कॉम्पिटिटिव का भी कैरेक्टर है. सो लेट्स सी क्या ये है. हियर द inhibitor bind to non-catalytic site. तो ये किसके साथ ये कैरेक्टर मैच किया? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का कैरेक्टर है क्योंकि ये नॉन कैटालाइटिक साइट में बाइंड करता है एंड दैट नॉन कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग साइट और नॉन कैटालाइटिक साइट इज कॉल्ड एज modulator binding site. That non-catalytic site is called as what? Modulator binding site. मैं आपको क्लियरली समझाऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से, डोंट वरी. Second point, it is reversible process. किसका कैरेक्टर है ये? कॉम्पिटिटिव का. तो अगर ये रिवर्सिबल है तो क्या कोवलेंट इंटरेक्शन होगा कि नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन? नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन. देखिए दोनों का कैरेक्टर हो गया ना. एक तो ये नॉन कोवलेंट रिवर्सिबल है, दूसरा ये नॉन कैटालाइटिक साइट मॉड्यूलेटर बाइंडिंग साइट में बाइंड करता है. कंप्लीट है क्या? कंप्लीट है. So let's see. For example, ये एक एंजाइम है मान ली, and this one is actually catalytic site and this one is non-catalytic site called as what? Modulator binding site. Modulator binding site. तो कैटालाइटिक साइट को आप क्या बोल सकते हैं? सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट और एक्टिव साइट भी बोल सकते हैं. That is substrate binding site. And this one is non-catalytic site. देखो कंसेप्ट ये है, मॉड्यूलेटर का काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मॉड्यूलेटर? मॉड्यूलेटर मतलब जो मॉड्यूलेट करता है. एंड मॉड्यूलेशन का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉड्यूलेशन? आइदर बाय मींस ऑफ स्टिमुलेशन और बाय मींस ऑफ इनहिबिशन. तो मॉड्यूलेशन का काम है आइदर स्टिमुलेट करना या तो इनहिबिट करना, इंक्रीज कराना या तो डिक्रीज कराना विथ रेस्पेक्ट टू द नीड, बॉडी के नीड के हिसाब से
या तो ये पॉजिटिवली मॉड्यूलेट करेगा या तो निगेटिवली मॉड्यूलेट करेगा। दैट इज व्हाई मॉड्यूलेटर दो टाइप का है, एक है पॉजिटिव मॉड्यूलेटर, सेकेंड इज निगेटिव मॉड्यूलेटर। पॉजिटिव मॉड्यूलेटर क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा या इनिबिट करेगा प्रोसेस को, क्या करेगा, सो इंक्रीज द रिएक्शन की डिक्रीज द रिएक्शन, इसको बोलेंगे पॉजिटिव फीडबैक। एंड नेगेटिव मॉड्यूलेटर विल डिक्रीज द रिएक्शन, क्या बोलेंगे उसको, नेगेटिव फीडबैक। और हम लोग हेडिंग क्या दिए हैं, हेडिंग क्या दिए थे हम लोग, फीडबैक इनिबिशन। अगर ये फीडबैक इनिबिशन की बात हम लोग पढ़ रहे हैं, देन हियर मॉड्यूलेटर विल बी व्हिच टाइप ऑफ मॉड्यूलेटर, नेगेटिव मॉड्यूलेटर की पॉजिटिव मॉड्यूलेटर, नेगेटिव मॉड्यूलेटर। ऑब्वियसली वो रिएक्शन को डिक्रीज कर रहा है, इनिबिट कर रहा है, इनिबिशन पढ़ रहे हैं ना हम लोग। इनिबिशन क्योंकि पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा मॉड्यूलेटर है, नेगेटिव मॉड्यूलेटर विल बी बाइंड विद द मॉड्यूलेटर बाइंडिंग साइट टू decrease the efficiency of the enzyme to stop the secretion of the product, right? यहाँ पे प्रोडक्ट यहाँ पे आके बाइंड करेगा to stop the reaction to decrease the reaction. That is why it is called as negative feedback. समझ में आया कि नहीं? Let's see the example. तीन एग्जाम्पल हम यहाँ पे देंगे, बहुत ही यूनिक एग्जाम्पल है, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। सो पहले देखते हैं, ग्लूकोज प्लस एटीपी, glucose plus ATP in presence of the enzyme glucokinase. Now the product which will form is glucose 6-phosphate plus ADP. समझ में आएगी नहीं? ATP के पास कितना फॉस्फेट है, 3 phosphate. Now 1 phosphate from ATP to change into what, ना bind with the glucose to form glucose 6-phosphate. तो ये फॉस्फेट किस पोजीशन में बाइंड किया ग्लूकोज का, 6 कार्बन के साथ, इसीलिए नाम है ग्लूकोज 6-phosphate. तो अभी एटीपी के पास कितना फॉस्फेट बचा है, 2. दैट इज बाय नाउ इट इज कॉल्ड एज व्हाट, एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट. एंजाइम क्या है, ग्लूकोहेक्सोकाइनेज. तो हियर इट इज द सबस्ट्रेट एंड हियर इट इज द प्रोडक्ट. मैंने आपको क्या बोला, प्रोडक्ट विल एक्ट एज ए इनहिबिटर, है कि नहीं? यहाँ पे कौन इनहिबिट कर रहा है ग्लूकोहेक्सोकाइनेज को, ना ग्लूकोज 6-phosphate. अब सोचिए ग्लूकोज 6-phosphate का क्वांटिटी अगर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, अगर हाई हो जाएगा तो क्या मैंने बोला था, they will reach the equilibrium. एंड अगर इक्विलिब्रियम रीच किया तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, द पर्सन विल डाई. दैट इज व्हाई ये ग्लूकोज 6-phosphate या तो किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा या तो ये रिएक्शन को स्टॉप कर देगा. And how they will decrease the reaction rate by means of inhibition mechanism. And here the product act as inhibitor. जैसे ही प्रोडक्ट का क्वांटिटी कम हो जाएगा, फिर से ये रिएक्शन फिर से क्या होगा ना, स्टार्ट होगा. इसलिए ये रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है? हाँ. सो क्वेश्चंस आता है कि all concentration of product act as a inhibitor. ये जो रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, क्या ग्लूकोज 6-phosphate 100% ये इनहिबिट करेगा ग्लूकोहेक्सोकाइनेज को? नो. High concentration of glucose 6-phosphate will act as the inhibitor. Low concentration of glucose 6-phosphate doesn't act as a inhibitor. Inhibit किया तो रिएक्शन तो स्टॉप हो गया ना. रिएक्शन स्टॉप होगा तो धीरे धीरे ग्लूकोज 6-phosphate का क्वांटिटी नॉर्मल हो जाएगा. नॉर्मल होने के बाद फिर से इसका इनहिबिशन मैकेनिज्म स्टॉप होगा, फिर से रिएक्शन कंटिन्यू करेगा. क्लियर है?
Example number 2. Fructose 6-phosphate plus ATP gives rise to fructose 1,6-biphosphate plus ADP. The enzyme which is responsible is called as phosphofructokinase. Phosphofructokinase. ATP यहाँ पे क्या है? सबस्ट्रेट है. ADP यहाँ पे क्या है? प्रोडक्ट है. ध्यान से सुनिए. मैंने रिएक्शन में स्टार्टिंग में क्या डेफिनेशन लिखाया था? The product must be belongs to the same chemical reaction or may be belongs to different chemical reaction which act as an inhibitor. So here actually the ATP act as a inhibitor. And ADP act as a stimulator. आप बोलेंगे ATP तो सबस्ट्रेट है, तो ATP तो सबस्ट्रेट हुआ तो इनहिबिटर कैसे कर सकता है? इसीलिए मैंने रिएक्शन पहले डेफिनेशन में क्या लिखा है कि द प्रोडक्ट of the same chemical reaction or different chemical. So here the ATP is not the product of this chemical reaction, but ATP must be the product of some other chemical reaction, right? And that will act as an inhibition to the phosphofructokinase to stop this particular reaction. But the ADP act as a stimulator and ATP act as an inhibitor. Next, example number 3. Threonine by means of the enzyme threonine deaminase leads to the formation of product 1, then product 2, then product 3, then product 4, and finally the final product is called as isoleucine. Threonine deaminase को मान लेते हैं enzyme 1. This is the second reaction which is catalyzed by the second enzyme E2. Then it is P2 to P3 by means of the third enzyme called as E3. P3 to P4 by means of the another enzyme called as E4. And P4 to final product that is catalyzed by another enzyme called as P final. तो ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है कि सिंगल स्टेप रिएक्शन? So isoleucine here act as what? The final product. Right? होता क्या है? Now this isoleucine will inhibit the threonine deaminase. फिर से मैं वो सेंटेंस फिर से रिपीट कर रहा हूँ. The product of the same chemical reaction or different chemical reaction act as an inhibitor to inhibit the enzyme to stop the reaction, right? अब देखिए यहाँ पे isoleucine सेम केमिकल रिएक्शन का है कि डिफरेंट केमिकल रिएक्शन का है? अरे सेम कैसे हुआ? आपका यहाँ पे 5 केमिकल रिएक्शन दिख रहा है कि नहीं? How many chemical reaction is there? 5. And isoleucine क्या सेम केमिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट है कि डिफरेंट केमिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट है? भाई डिफरेंट है. आपके सामने मैंने रखा है 5 केमिकल रिएक्शन. तो isoleucine is the final product of the fifth reaction. लेकिन वो किस एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है? फर्स्ट एंजाइम ऑफ द फर्स्ट रिएक्शन. तो उससे क्या होगा? P1, P2, P3, P4 and the final product will not form.
तो एक स्टेप अगर रुक गया, इनहिबिट हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा कि नहीं? क्लियर है? इट इज कॉल्ड एज फीडबैक इनहिबिशन। कंप्लीट। कंप्लीट। यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछेगा, आपके दिमाग में वो चलना होना चाहिए, समझना होना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं कि प्रोडक्ट हियर नेवर रीच द मैक्सिमम। रीच करेगा यहाँ पे प्रोडक्ट, क्या मैक्सिमम रीच करेगा? क्योंकि मैक्सिमम रीच करने से पहले ही वो प्रोडक्ट एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है। यस और नो? तो इज देयर एनी Vmax? इज देयर एनी Vmax? जैसे बाकी चीज में हम लोग देखें Vmax है मैक्सिमम वेलोसिटी, यहाँ पे आप मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल सकते हैं? नो। बिफोर रीचिंग Vmax, the product is inhibiting the enzyme. The product is changed into another type of chemical. So this particular reaction does not have Vmax. अगर किसी का Vmax नहीं है तो you cannot also go for the Vmax by 2. अगर Vmax by 2 नहीं है तो क्या Km होगा? होगा Km? No Km. That is why question is asking कि which enzyme does not have or doesn't follow Km? Allosteric enzyme. Which enzyme? Allosteric enzyme. So write please as the reaction never reach Vmax, so no Vmax by 2 or Km. So allosteric enzyme do not have Km. So this is all about the enzyme reaction inhibition mechanism. Now we are coming to the next topic. Classification and nomenclature of enzyme. Classification and nomenclature of enzyme. एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है एनसीईआरटी का, कि एंजाइम हैज देखिए, आप लोग जैसे किंगडम पढ़े हैं प्लांट में, एनिमल में, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द हायरार्की, राइट? एंजाइम का भी क्लासिफिकेशन है। आप लोग जानते हैं 1000 मिलियंस वैरायटी ऑफ एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन योर बॉडी, मिलियंस वैरायटी। लेकिन उनका ग्रेडेशन, उनका क्लासिफिकेशन, ग्रुपिंग करना भी जरूरी है कि कौन से एंजाइम का कैरेक्टर क्या है, कौन सा एंजाइम का नेचर क्या है। And that is why enzyme has 6 classes and 4 to 13 subclasses. 6 classes and 4 to 13 subclasses, ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन है। Let's understand this. Supposed to be, हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, मान लेते हैं मैंने एग्जांपल लिया 3.2.4.5, मान लेते here the first जो
फर्स्ट जो नंबर है दैट रिप्रेजेंट द क्लास ऑफ द एंजाइम। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है, हियर इट इज व्हिच क्लास ऑफ एंजाइम। ये जो एग्जांपल दिया है कौन से क्लास का एंजाइम है, हियर इट इज थर्ड क्लास, राइट। यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिया है कौन सा क्लास का एंजाइम का एग्जांपल दिया है, थर्ड क्लास। यहाँ पे आपका मैक्सिमम 6 तक हो सकता है। हाउ मेनी क्लासेस आर देयर, 6 क्लासेस, 1 2 3 4 5 6 मैक्सिमम। तो यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट लिया है, मतलब थर्ड क्लास है। एंड दिस इज सब क्लास। एक पर्टिकुलर एंजाइम का, एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ एंजाइम का मैक्सिमम 13 सब क्लास हो सकता है। मिनिमम कितना हो सकता है ना, 4। मिनिमम 4 सब क्लास, मैक्सिमम 13 सब क्लास। तो यहाँ पे कौन सा सब क्लास मैंने दिया है, सेकेंड सब क्लास। सेकेंड सब क्लास 4 तक हो सकता है मिनिमम, एंड मैक्सिमम कितना हो सकता है, 13। दिस इज इंडिकेट द सब क्लास। This indicate the individual enzyme. This is actually the nomenclature of enzyme. मैं क्लासिफिकेशन स्टार्ट करें। तो अगर आपको दिया गया ऐसे कोई एग्जांपल, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ध्यान कहाँ पे लगाना है, ओनली टू द फर्स्ट वन, ओनली टू द फर्स्ट वन। बाकी सब सिलेबस से बाहर है। सिर्फ आपको रखना है याद, ये 3 दिया है तो कौन सा क्लास है, 4 दिया है तो कौन सा क्लास है। तो हम लोग को सीरियली फर्स्ट से लेके 6 क्लास तक सीरियली देखना है। एंड दिस इज द थर्ड क्लास। इन थर्ड क्लास एंजाइम का नाम क्या है, हाइड्रोलेज। तो ये कौन सा एंजाइम का एग्जांपल दिया मैंने, हाइड्रोलेज क्लास एंजाइम का एग्जांपल दिया। कंप्लीट है। तो नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं। चले नेक्स्ट पेज। So I'm coming to the classes of enzyme. I'm coming to the number 1, class 1. Oxidoreductase or dehydrogenase. Oxidoreductase or dehydrogenase. So class 1, oxidoreductase or dehydrogenase. Start करें। This enzyme actually catalyzes the oxidation reduction reaction which involve the transfer of electron or H plus ion from one molecule to another molecule. So just see the statement. फर्स्ट क्लास ऑफ एंजाइम का कैरेक्टर क्या है ना, ये कौन सा रिएक्शन को कैटलाइज करता है ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इन व्हिच दे जस्ट involve the transfer of what na electron or H plus from one molecule to or one chemical to another chemical. ये खाली शिफ्ट कराता है H plus और इलेक्ट्रॉन को. Then it is called as what na, dehydrogenase or oxidoreductase.
लेट्स सी द एग्जांपल। जैसे कि हम ऐसे लिख सकते हैं, ये एक सबस्ट्रेट है, सपोज टू बी केमिकल है, ये रिड्यूस्ड, ये और एक केमिकल है एस डैश। एस डैश क्या है ना, ऑक्सीडाइज। अब केमिकल रिएक्शन जब होगा, जो एस था वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। तो एस डैश था, अब क्या हो जाएगा वो, रिड्यूस्ड, बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ व्हाट, ट्रांसफर ऑफ H प्लस आयन इलेक्ट्रॉन। समझ में आएगी नहीं? तो एग्जांपल हो जाएगा डिहाइड्रोजनेज, ऑक्सीडेज, रिडक्टेज। ऑक्सीडेज, रिडक्टेज, कैटालेज, पेरोक्सीडेज। ये जितने भी एंजाइम का लिस्ट मैंने दिया, ये सारे के सारे इसी कैटेगरी में आते हैं, that involves the transfer of electrons or H plus from one molecule to another molecule. One become reduced, the another become oxidized. ठीक है? एक रिएक्शन का एग्जांपल दे देते हैं। अल्कोहल, कल ही मैंने आपको बताया था, अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ विच एंजाइम, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। आप समझे? सो अल्कोहल प्लस NAD, NAD का फुल फॉर्म क्या है, निकोटिनामाइड एडेनाइड डाइन्यूक्लियोटाइड। सो अल्कोहल प्लस NAD in presence of the enzyme alcohol dehydrogenase gives rise to the formation of aldehyde plus NAD. NADH2 H प्लस होगा ना, NADH2। तो देखिए यहाँ पे, देखिए जो रिड्यूस था वो ऑक्सीडाइज हो गया, जो ऑक्सीडाइज था वो रिड्यूस हो गया। तो ये था फर्स्ट क्लास, क्लास 1 ऑक्सीडो रिडक्टेज और डिहाइड्रोजिनेज। अभी हम लोग आते हैं क्लास 2। ट्रांसफरेज। Here it involves catalyze the transfer of specific groups. So catalyze the transfer of specific group other than hydrogen or H plus. तो अगर H plus को ट्रांसफर करेगा तो वो कौन सा एंजाइम है, फर्स्ट क्लास। But here the second class of enzyme is not transferring the H plus or electron, but other than that, that transfer the some of the specific groups. जैसे कि supposed to be ये S and this one is S dash. G stands for what? The specific group. G क्या है? Specific group other than H plus. So here the specific group which is bind with the S. Now that will be changed from S to what? The S dash. ये ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है, एनसीईआरटी में यही सब दिया हुआ, ध्यान से इसको समझ के याद रखना पड़ेगा। So the specific group is bind with the S in the substrate. जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वो कहाँ पे आ गया, S डैश को चेंज हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो एग्जांपल हो जाएगा ट्रांसएमिनेज एंड काइनेज।
ट्रांस एमिनेज और काइनेज एग्जांपल देते हैं एक रिएक्शन का। हम लोग शायद प्रीवियस क्लास में ही इसको डिस्कशन किए थे। दैट इज ग्लूकोज प्लस एटीपी। अभी तो हम लोग पढ़े थे ग्लूकोज प्लस एटीपी चेंज इनटू व्हाट? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्लस एटीपी। एंजाइम का नाम क्या है? ग्लूकोहेक्सोकाइनेज। हो गया। So kinase is belongs to what na cattle transferase enzyme. Now we are coming to class 3. Number 3. Class 3. Hydrolysis. To catalyze the peptide bond, ester bond, ether bond, the peptide, ester, ether, glycosidic, carbon carbon bond, carbon halide bond, phosphorus nitrogen bond, etc. अभी आपको दिमाग लगाना कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड किसमें होता है? ना कार्बोहाइड्रेट। पेप्टाइड बॉन्ड किसमें होता है? प्रोटीन में। ईस्टर बॉन्ड किसमें होता है? लिपिड में। एंड ग्लाइकोसाइडिक ईस्टर बॉन्ड बोथ प्रेजेंट इन द न्यूक्लिक एसिड। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये सारे के सारे डाइजेस्टिव एंजाइम को बिलोंग्स करता है कि नहीं? एग्जाम्पल, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स आर कॉल्ड एज व्हाट? प्रोटीएज। Carbohydrate digestive enzymes are called as what? Amylase. Lipid digestive enzymes are called as what? Lipase. Nucleic acid digestive enzymes are called as what? Nuclease. And other digestive enzymes. For example, sucrose. पढ़े थे हम लोग sucrose is a disaccharide which is combination of what ना glucose plus fructose. याद है? Glucose plus fructose gives rise to sucrose. एंड वहां पे बॉन्ड जब फॉर्मेशन होता था ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड विद द रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो अभी हम लोग को बॉन्ड का अगर ब्रेक डाउन करना है तो वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ेगा कि नहीं? डिहाइड्रेशन की हाइड्रेशन। फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज ए डिहाइड्रेशन, ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्ड इज ए हाइड्रेशन। Formation of bond is a dehydration, whereas the breakdown of bond is a hydration. And in presence of the enzyme called as sucrase. सुक्रोज को जो ब्रेक डाउन करेगा उस एंजाइम का नाम क्या है? सुक्रेज। गिव्स राइज टू ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। तो हियर एक्चुअली हाइड्रोलाइज क्या कर रहा है? हाइड्रोलाइज क्या कर रहा है? एक सेंटेंस यहां लिख दीजिए। हाइड्रोलाइज क्या कर रहा है? ना ब्रेक डाउन ऑफ large molecule into small molecule with the addition of water.
with the addition of water. So breakdown of large molecule into small molecule with the addition of water is called as the function of hydrolase, and they catalyze this bond. Example हो गया, reaction हो गया. Now we are coming to number 4. Class 4. Lines. क्या लग रहा है क्या? Yes, sir. बंद कर दीजिए 10 मिनट के लिए. Yes. Breakdown of large molecule into small molecule. Silent. Breakdown of large molecule into small without use of water or removal of any other group. Without use of water or removal of group. So what is the difference between the hydrolase and lyase? Hydrolase may be large into small हो रहा था, but with the addition of water. लेकिन यहाँ पे large into small हो रहा है, but without use of water or without addition of water or without removal of any kind of group. Although a double bond ये उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाइज में क्या होगा ना, जब ब्रेकडाउन होगा लार्ज इनटू स्मॉल, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट, नल लाइज. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ तो समझ में आ जाएगा. ये देखिए लार्ज मॉलिक्यूल है, C3 के साथ XY है, राइट. अब क्या होगा ना, ये स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया कि नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी हो गया विदाउट द एडिशन ऑफ एनी काइंड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. एग्जांपल देते हैं लाइज का, एल्डोलेज, डीकार्बोक्सिलेज, कार्बोनिक एनाइड्रीन्स, एल्डोलेज, डीकार्बोक्सिलेज, कार्बोनिक एनाइड्रीन्स एटसेट्रा. कंप्लीट है क्या? Yes. चलें नेक्स्ट पेज में. इसका एक रिएक्शन देते हैं. fructose 1,6 biphosphate fructose 1,6 biphosphate in presence of the enzyme called as aldolase, that will be converted into glyceraldehyde phosphate plus dihydroxyacetone phosphate.
तो यहाँ पे लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुआ कि नहीं? एंड अगर केमिकल फॉर्मूला देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट विदाउट द एडिशन ऑफ वाटर. So this is the aldolase which comes under which category? Class 4. नाम क्या है? Light. फर्स्ट क्लास क्या था? ऑक्सीडोरिडॉक्टेस डिहाइड्रोजनेस. सेकेंड क्लास क्या हो गया? ट्रांसफेरेंस. थर्ड क्या हो गया? नाइट्रोजनेस. फोर्थ क्या है? Yes, lies. Now we are coming to the class 5. Isomerase. तो आइसोमेरेज का मतलब क्या है इसमें क्या मतलब समझ में आ जाए कि भाई ये आइसोमर क्रिएट करेगा. एंड आप लोग बड़े हो थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में कि जियोमेट्रिक आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर पढ़े हो कि नहीं? ओके. सो कैटलाइज द रीअरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल. कैटलाइज द रीअरेंजमेंट ऑफ molecule to form isomer. मैं डायरेक्टली एग्जांपल देता हूं. एग्जांपल भी आइसोमेरेज ही होगा. जैसे कि एक रिएक्शन देते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. ग्लूकोज क्या है? हेक्सो शुगर है कि पेंटो शुगर है? हेक्सो शुगर है. फ्रुक्टोज क्या है? हाँ, फ्रुक्टोज तो पेंटोज ही है. बहुत बढ़िया. ये मुझे समझ में आता है कि आप लोग कितना पढ़ते हैं. आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है, डिसाइड कर लीजिए. आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है. 1 महीना हम लोग का क्लास हो चुका है, 1.5 महीना, और आप लोग पढ़ते कुछ है नहीं और फ्रुक्टेज को बोलेंगे कि 5 का है. वाह, बन जाइए. The enzyme is called as isomerase. तो ये खाली रीअरेंजमेंट करता है. पायरेनोस को फ्यूरानोस में कन्वर्ट कर दिया, बट कार्बन तो वही है ना, 6 कार्बन तो 6 कार्बन. ये भी 6 फॉस्फेट है, वो भी 6 फॉस्फेट है. मतलब ये 6 कार्बन में ये भी लगा है, वो भी 6 कार्बन. कम से कम देख के तो बोलना चाहिए था कि ये भी 6 कार्बन में फॉस्फेट ऐड हो रहा है, वहां पे भी 6 कार्बन में फॉस्फेट ऐड हो रहा है. मतलब वो हेक्सो शुगर है कि पेंटो शुगर है? हेक्सो शुगर है. बिना देखे बिना सोचे आप लोग को तो बोलने का पुराना आदत है, क्या कर सकते हैं. तो ये क्या किया? सिर्फ रीअरेंजमेंट किया. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज आइसोमर. एंड द लास्ट, क्लास 6, लाइगेज. आप लोग लाइगेज के बारे में पढ़े हैं. लाइगेज ज्वाइन करता है. अरे है कि नहीं? पढ़े हो कि नहीं? डीएनए में, डीएनए के स्ट्रक्चर में आप लोग पढ़े हो कि नहीं? डीएनए लाइगेज नहीं पढ़े? डीएनए लाइगेज क्या करता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को फॉर्म करता है, उसको ज्वाइन करता है. तो लाइगेज catalyze the covalent bonding of two substrates between two substrates to form a large molecule. हर जगह हमने क्या दिखा? या तो वो ब्रेक कर रहा है या तो रीअरेंज कर रहा है कि नहीं? दिस इज द ओनली
class enzyme which will form the bond or break the bond? Form, क्योंकि ये क्या कर रहा है? Two substrate to form a branch. That is why ये join कर रहा है, joining. So they catalyze the joining of. They catalyze the joining of carbon carbon, carbon phosphate, sorry, carbon sulfate, phosphorus nitrogen, etc. एग्जाम्पल देते हैं, डीएनए लाइगेज, कार्बोक्सिलेज, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, आप लोग शायद पढ़े होंगे, याद होगा, pyruvic acid, phosphoenol pyruvic acid in presence of the carbon dioxide gives rise to what? Oxaloacetic acid. पढ़े हो? Plus carbon dioxide, phosphoenol pyruvic acid plus carbon dioxide gives rise to oxaloacetic acid. In presence of which enzyme? PEP carboxylase. नाम क्या है फुल फॉर्म इसका? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज. पढ़े हो कि नहीं? अरे आप लोग सब पढ़े हो, कुछ याद ही नहीं रहता है आप लोगों को. 11th में से 10th में आप लोग इसके बारे में पढ़े होंगे, या तो रेस्पिरेशन चैप्टर में पढ़े होंगे पक्का, मुझे याद है आप लोगों को ये पढ़ाया जाता है. नहीं तो 11th में पढ़ेंगे आप लोग, फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन में आपको बॉटनी में पढ़ाया जाएगा. ठीक है. So these are the 5 different classes we have finished. आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ याद रखने का यहाँ पे जरूरत क्या है? नंबर 1, नेम ऑफ द एंजाइम बिलोंग्स टू विच क्लास? क्लास का पूरा नाम सीरियली याद रखना है. सीरियली क्या क्या होगा? अगेन बोलिए. ऑक्सीडोरिडॉक्टेज डिहाइड्रोजनेज. सेकंड क्या है? ट्रांसफरेज. थर्ड क्या है? हाइड्रोलेज. फोर्थ क्या है? लाइज. फिफ्थ क्या है? आइसोमेरेज. सिक्स्थ क्या है? लाइगेज. ये सीरियली याद रखना पड़ेगा. मैक्सिमम जगह पे हम लोग कंफ्यूज होते हैं लाइज एंड लाइगेज. तो लाइज का कौन सा क्लास है? फोर्थ क्लास. लाइगेज क्या है? सिक्स्थ क्लास. ट्रांसफेरेज क्या है? सेकंड क्लास. हाइड्रोलेज क्या है? थर्ड क्लास. आइसोमेरेज क्या है? फिफ्थ क्लास. इतना ही तो याद रखना है. एंड सेकंड सबका डेफिनेशन, जैसे कि मैं आपको पूछ रहा हूँ, द एंजाइम व्हिच कैटलाइज द ब्रेकडाउन ऑफ द लार्ज इनटू स्मॉल with the formation of a double bond. Which of the following set of enzyme belongs to this category? तो ये जो डेफिनेशन मैंने आपको बोला, किस एंजाइम का डेफिनेशन है? लाइज. ठीक है. नेम द सेट ऑफ एंजाइम which actually that is form the covalent bonding between two molecules to form the large ligase. Transfer the electrons or protons from one to another. Hydroxylase, dehydrogenase, starting वाला H plus और E, that is electrons and protons मैंने लिखा है clearly देखो. भी पढ़ रहे अभी भूल जाओगे तो कैसे चलेगा? हाँ, डेडिकेशन लेवल दिख रहा है आपका.
Last topic of this chapter, cofactor. Enzyme binds to cofactor to exhibit catalytic properties. This sentence is very, very important. So you need to remember what? The enzyme will catalytically or catalytically that will be active only when the enzyme will bind with what? The cofactor. जब तक एंजाइम कोफैक्टर के साथ बाइंड नहीं करेगा, enzyme although they have a normal structure but they cannot have any catalytic property or activity up to when it is not bind with what ना cofactor. तो अगर हम एंजाइम से कोफैक्टर को सेपरेट कर दिए तो एंजाइम क्या होगा ना, डिनेचुरेशन नहीं होगा. डिनेचुरेशन का कारण मैंने आपको क्या बताया था? हाई टेम्परेचर, दैट इज चेंज इन द पीएच, that is salt of the heavy metal and high energy radiation. These are factors associated with what? The breakdown of the different type of bond to convert the tertiary again into primary, called as what? A denaturation. Denaturation अलग चीज है, catalytic property अलग चीज है. Catalytic property of an enzyme will be only present only when it is bind with what? आप कोफैक्टर को हटा लेंगे तो एंजाइम का डिनेचुरेशन नहीं होगा बट वो इनएक्टिव हो जाएगा. अब कोफैक्टर को फिर से ऐड कर दीजिए, एक्टिवेट हो जाएगा. So as to ensure the catalytic property of an enzyme, we need to bind cofactor with the enzyme. So इसीलिए कोफैक्टर के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं. देखिए, one enzyme has two part. Protein part of an enzyme is called as what? Apoenzyme. कौन सा प्रोटीन है ये? टर्शियरी स्ट्रक्चरल प्रोटीन है ये. तो टर्शियरी स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो एंजाइम का पार्ट है उसका नाम क्या है ना? एपोएंजाइम. सो एपोएंजाइम इज अ प्रोटीन पार्ट, whereas the second, which is the non-protein part, is called as what? Cofactor. So one enzyme will be called as a complete enzyme, full enzyme, 100%. That is, enzyme will be present or formed only when it is apoenzyme plus cofactor. Now this enzyme is called as holoenzyme. Enzyme, all enzymes are not holoenzyme. Holoenzyme होने के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन बोथ होना चाहिए. And that non-protein part of that enzyme is called as what? Cofactor. And the protein part of the enzyme is called as what? Apoenzyme. तो अगर हाई टेम्परेचर आप देते हैं, who will be affected? Apoenzyme affected होगा, coenzyme affected होगा, या apoenzyme, holoenzyme both affected? देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. जब भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाई टेम्परेचर विच विल बी अफेक्टेड, तो दिमाग में बस इतना होना चाहिए कि हाई टेम्परेचर होगा तो सिर्फ प्रोटीन पार्ट ही अफेक्टेड होगा. ठीक है. एंड प्रोटीन पार्ट यहाँ पे एपोएंजाइम में भी है प्लस होलोएंजाइम में भी, बिकॉज़ होलोएंजाइम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? तो होलोएंजाइम के अंडर एपोएंजाइम आता है कि नहीं? तो डिनेचुरेशन किसका होगा ना? एपोएंजाइम को होगा प्लस होलोएंजाइम का होगा, दोनों ही अफेक्टेड होंगे. बट क्या कोफैक्टर अफेक्टेड होगा? और थोड़ा सा कंफ्यूज हम लोग कर रहे हैं आपको. कोफैक्टर 3 डिफरेंट टाइप्स. वन इज प्रोस्थेटिक ग्रुप, second is coenzyme, third is metal ion. तो आपको अभी क्वेश्चन फिर से मैं पूछ रहा हूँ, अंडर द हाई टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग
will not affected. एपोएंजाइम, होलोएंजाइम, कोएंजाइम कौन सा अफेक्टेड नहीं होगा? कौन सा अफेक्टेड नहीं होगा? नॉन प्रोटीन पार्ट अफेक्टेड नहीं होगा, प्रोटीन पार्ट अफेक्टेड होगा। तो विच इज नॉन प्रोटीन पार्ट? यस, देखो अभी कंफ्यूज करने के लिए मैंने पूछा ना आपको, ऐसे आपको कंफ्यूज करेगा। एपोएंजाइम, कोएंजाइम, होलोएंजाइम which will not affected under the high temperature. Now coenzyme, because coenzyme is a cofactor and cofactor is a non-protein. ये है क्वेश्चन। अभी हम लोग तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ के इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। First coming to prosthetic group. Organic compound which bind tightly. The organic compound which bound tightly with apoenzyme for a long time period is called as what ना? Prosthetic. तो prosthetic group में यहाँ पे दो चीज पे आपको फोकस करना है। नंबर वन, ये इनऑर्गेनिक है कि ऑर्गेनिक है? ऑर्गेनिक। ये टाइटली बाउंड होता है कि लूजली बाउंड होता है? किसके साथ ना? प्रोस्थेटिक ग्रुप किसके साथ बाइंड करेगा? एपोएंजाइम के साथ। टाइटली बाइंड कर रहा है कि लूजली बाइंड कर रहा है? टाइटली बाइंड करेगा तो लॉन्ग टाइम के लिए या शॉर्ट टाइम के लिए? ये तीन चीज पे फोकस करना। सेकेंड है एग्जाम्पल, heme is a prosthetic group of heme is a prosthetic group of peroxidase and catalase. यहाँ पे दो एंजाइम मैंने दिया, पेरोक्सीडेज एंजाइम एंड कैटालेज एंजाइम। उसका प्रोस्थेटिक ग्रुप का नाम क्या है? हेम। हेम इज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप फॉर विच एंजाइम? ना, पेरोक्सीडेज एंड कैटालेज। तो अगर हम हेम ग्रुप को निकाल देंगे तो प्रोस्थेटिक सॉरी पेरोक्सीडेज एंड कैटालेज विल यूज द कैटालाइटिक प्रॉपर्टी और विल डिनैचुरल? will use the catalytic property, क्योंकि हेम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है ना? कोफैक्टर। तो यहाँ पे हेम इज द कोफैक्टर फॉर विच एंजाइम? ना, पेरोक्सीडेज एंड कैटालेज। अगर आप हेम ग्रुप को निकाल देंगे, पेरोक्सीडेज एंड कैटालेज तो स्ट्रक्चरली प्रेजेंट रहेगा बट विल लूज द फंक्शनल प्रॉपर्टी। फंक्शनली दैट विल बिकम्स इनएक्टिव। क्लियर है? कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, नंबर 2, कोएंजाइम। कोएंजाइम का कैरेक्टर देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड which bound loosely with apoenzyme for short time period. तो मैंने आपको इसीलिए बोला था यहाँ पे यही सेम, थ्री डिफरेंट बट पूरा उल्टा है। ठीक है? दैट इज व्हाई द क्वेश्चन इज आस्किंग फ्रॉम देयर। क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में, ये 3-4 साल पहले ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। फॉर एग्जांपल, NAD and NADP
NAD and NADP. सेकेंड है FMN and FAD. NAD and NADP actually derivative of विटामिन B3. विटामिन B3 का साइंटिफिक नेम क्या है? नियासिन. पढ़े हो क्या? उसका अदर नेम क्या है? निकोटिनामाइड. And FMN, FAD, these are actually derivative of विटामिन B2. ठीक है, एंड जिसका साइंटिफिक नेम है राइबोफ्लेविन. तो यहाँ पे भाई सीधा सीधा सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कोफैक्टर और कोएंजाइम्स आर डेरिवेटिव ऑफ विटामिन B3, विटामिन B2. तो विटामिन B3 डेरिवेटिव कोएंजाइम कौन कौन है? NAD, NADP. फुल फॉर्म जिसको नहीं पता है मस्ट राइट. फुल फॉर्म क्या है NAD का? निकोटिनामाइड एडेनाइल डाइन्यूक्लियोटाइड एंड इट इज फॉस्फेट. FMN एंड FAD का फुल फॉर्म क्या है? FMN का हो गया फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड एंड FAD हो गया फ्लैविन एडेनाइल डाइन्यूक्लियोटाइड. फ्लैविन सब पढ़ोगे आप लोग तो फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन चैप्टर में आ जाएगा. तो FMN and FAD are the derivative of vitamin B2, that is riboflavin, whereas NAD, NADP are the derivative of vitamin B3, that is niacin or nicotinamide. And the last number 3, metal ion. जैसे कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है. आप लोग पढ़े हो 9th 10th में DNA पॉलीमरेज पढ़े हो ना? अरे पढ़े हो कि नहीं DNA पॉलीमरेज? कि वो भी नहीं पढ़े हो? DNA रेप्लिकेशन के लिए DNA पॉलीमरेज चाहिए. पढ़े हो? एंड DNA रेप्लिकेशन में जो DNA पॉलीमरेज है उसका कोफैक्टर का नाम क्या है? Which is the cofactor for the DNA polymerase enzyme? ना Mg2+. वैसे ही आपके माउथ में बकल कैविटी में जो सैलिवरी अमाइलेज है, सैलिवरी अमाइलेज को एक्टिवेट करने के लिए भी कोफैक्टर चाहिए. एंड व्हाट इज द कोफैक्टर फॉर दिस सैलिवरी अमाइलेज? ना क्लोराइड आयन. तो ये सब क्या है? मेटल एंड नॉन मेटल आते हैं कि नहीं? मोस्टली दे आर कम्स अंडर व्हाट? ना मेटल आयंस. इसीलिए मैं उसका लिस्ट आपको दे देता हूँ. मेटल आयंस का बहुत सिंपल लिस्ट है, बहुत ज्यादा नहीं करूंगा, एकदम मिनिमम. जैसे कि ferrous iron and ferric iron. These are the cofactor for cytochrome oxidase, catalase, peroxidase. Calcium ion is the cofactor for lipase enzyme. Succinic dehydrogenase. Mg2+, hexokinase, DNA polymerase, copper ion, cytochrome oxidase.
जिंक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ ये जिंक मेंशन किया है। एनसीईआरटी में सिर्फ जिंक वाला पोर्शन मेंशन किया है, इसीलिए 99% चांस अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा देन इट इज बिलोंग्स टू व्हाट ना, जिंक। एग्जांपल है जिंक का, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। एंड इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा याद रखना है, जो एनसीईआरटी में दिया है, कार्बोक्सीपेप्टिडेज। तो जिंक इज ए मेटल एंड एक्ट एज द कोफैक्टर फॉर कार्बोक्सीपेप्टिडेज, जो कि एनसीईआरटी का सेंटेंस। तो आपको अभी समझ में आ गया कि क्वेश्चंस कैसे आता है। ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर।